पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बीबी की हालत बहुत खराब थी और तूफान आया हुआ है शायद वहां पे, और मुझे जाना भी वहीं पे है। जाना क्यों है? क्योंकि बीबी अब ठीक हो चुका है, लेकिन उससे मिलने के लिए डॉक्टर डेडमैन से मुझे वहां जाना है जहां पे तूफान देख रहे हो। लेकिन मुझे कुछ और भी दिख रहा है सामने। वो दिख रहा है आपको? ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक यहाँ बना लेता हूँ तो वहां पहुंचना आसान होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो पहले एक क्रिएट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं फिर आपसे बात करता हूं, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और बहुत धूम धड़ाका हो रहा है। सो यू नो नमस्कार देवियों और सज्जनों, एंड माय डियर दमदार किंग्समैन। आप देख रहे हैं डेथ स्ट्रैंडिंग डायरेक्टर्स कट का अगला एपिसोड, जहां बहुत हल्ला हो रहा है। बाय गॉड, सच में बहुत हल्ला हो रहा है। और डेड मैन ने मुझे यहाँ बुलाया है इस जगह पे मिलने के लिए, क्योंकि बोल रहा है कि आप यहाँ मुझसे आके मिलो और अपने बीबी को लेके जाओ। बट कुछ और प्रॉब्लम भी है, शायद उसको डिस्कस करना चाहता है। तो पहले मैं रूट एक बना लेता हूँ जो मुझे यहाँ तक लेके जाए। रास्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। बट मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। चलते हैं। उप्स, आराम से आराम से। मैं उतरने की सोच रहा हूँ जल्दी से ना, इसलिए थोड़ा सा गिर रहा हूँ बार बार। ओके, यहाँ उतरते हैं। ऑलराइट, बस 150 मीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। Let's go. Whoa. ओह शिट, मैं शायद वापस पास्ट में आ चुका हूँ।
Sam! Sam! Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about. The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh shit. Oh boy. Already कर चुका है. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. Come on, man. So... फालतू की बकवास बहुत ज्यादा है और काम की बात बहुत कम है. Idiot. मेरी गन मेरे चप्पल जूते दिख रहे हैं यहाँ पे.
आई नीड अ गन मैन, मुझे गन चाहिए फाइट करने के लिए। मेरे साथ डेडमैन भी यहीं फंस चुका, और अगर उस तक पहुंचना और बीबी को बचाना तो फिर मुझे हथियार चाहिए होंगे। तो जैसा हमने कहा बिल्कुल सही बात है, वो हमारे पीछे नहीं पड़ा है बल्कि बीबी के पीछे पड़ा हुआ है। See you soon. Lou. किसी के रोने की आवाज आ रही है क्या? मुझे गन चाहिए और ब्लड बैग मिले जा रहा है। Over here. Sam. Lou. The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. He's smiling. Oh boy. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. मैंने को बताया था ना, जो यहाँ मरता है उसका एक अपना। So, do you still share memories? अपना एक बीच होता है जहाँ पहुँच जाता है। बस हमारे अंदर क्वालिटी है कि हम वहाँ मर के भी वहाँ से वापस आ जाते हैं, बाकी लोग नहीं आ पाते हैं। तो ये बीच शायद इन सोल्जर्स की वो जगह है जहाँ मरने के बाद ये लोग आते हैं। Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down. That should get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. बड़ा डाइटिंग कर लिया होते ससुर, बाहर निकल आते ना। चलो चलो, अब बस खोजनी है एक अच्छी सी गन और करना है फाइट और निकलना है बाहर यहाँ से।
ये हम पहले कर चुके हैं स्किप द बैटलफील्ड, दोबारा करना है बस। इस बार किस तरह से अलग होगा वो तो वक्त बताएगा, देखते हैं। अब मैं और ब्लड बैग नहीं उठाने वाला, मैं बहुत ज़्यादा उठा लूँगा तो फिर हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। Oh boy, looky now. Okay, great. Come on, move, man. We need reinforcements. Move. लगे यहाँ तो एक शॉटगन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने बोला ना बीबी के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे पीछे नहीं। Come on, man. No. Throwing fire. Retreat. ये घंटी परेशान कर रही है शायद। We need reinforcements. जो ये ब्लड बैग में कैरी करता हूँ ना, जैसे ही मुझे चोट लगती है तो ब्लड बैग से ब्लड निकल के मेरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से मैं हील हो पाता हूँ। इसका ये काम होता है। ब्लड बैग एम्प्टी, न्यू ब्लड बैग रिक्वायर्ड। Open fire. मैं गलत जगह पे रुको।
Shotgun. Oh, babe. Nice. Light him up. बुलेट्स खत्म. हटाओ इसे. Reinforcements! Get back out there! This is all my fault. I should never have put you in that prison.
What the hell? Lou? Lou? How's little Lou doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. यार ये कितना उलझा हुआ है और अगर ये सच है तो फिर इसका I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. डेड मैन, इसलिए इसका नाम डेड मैन है. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. फ्रैंकेनस्टाइन की तरह इसको ही बनाया गया है ये एक. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges?
the battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. हाँ, उसका नाम Die Hard I've है. seen to it that our conversations won't be recorded. All right, अब काफ़ी सारी बातें बोलनी होगी मुझे तो यार. पूरी एक बहुत सारी बात आप खुद समझ गए होगे अगर आपने ढंग से सीरीज देखा होगा और स्किप नहीं किया होगा तो. बट इन केस अगर आपने नहीं समझा तो मैं किस लिए हूँ, मैं समझाता हूँ. शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक सही भी हो सकता है. सिंक यूज़ नहीं करना है मैन. लेट अस टेक अ शावर आई थिंक, बिकॉज बॉडी जिस तरह से हो रखी है शावर बेहतर होगा. सिंक नहीं सो लिया. पहले तो यार अगर अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो वो Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा होगा मैं किसी बात पे पहुंचूं उससे पहले. लेकिन ब्रिजेस के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा. जो मैं जिस थियरी के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में आपसे डिस्कस. Still there, Sam? If so, बॉय बहुत सारी बातें बहुत बकवास करते हो यार. बोलने का मौका नहीं मिलता मुझे. ये देख रहे हो यार कितनी What? निकलो यहाँ से निकलो. मुझे नहीं देखना है वो. आधे घंटे शांत बैठा हुआ हूँ यार. मैं नहीं रह सकता था चुप. मुझे बाहर निकालो यहाँ से. लेट्स गो मैन, लेट्स गो. सबको ऑर्डर डिलीवरी कराना है. सब ऑर्डर ना हुआ. जोमेटो को बंदा हो गया. ये लाके दो, वो लाके दो, ये ऑर्डर करो, वो. हद हो गया है मैन. गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, बस फ्रस्ट्रेट हो गया हूं थोड़ा सा. Can I help you? ये देखना तो बनता है. Holy shit. John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in.
I don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were perfect. मैन जिसके बारे में मैं Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. तो एक बॉडी लेके आनी है, आई थिंक मामा की बॉडी है शायद वो, बिकॉज वो बाकी बॉडीज की तरह बीटीज में कन्वर्ट नहीं हो रही है, शायद स्टडी करना चाहते तो बॉडी मुझे लेके कहीं से डिलीवर करना होगा और कुछ चीज़ें और होंगी। मैं खत्म करता हूँ फिर आपसे बात करूँ, मुझे बात करने बहुत मन कर रहा है, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, पागल हो रहा हूँ। एक मिनट, नहीं मामा की बॉडी है किसी और की बॉडी है वो? रुको ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुको। क्या हो गया बाबा? ना एक मिनट, सांस लो थोड़ा सा। एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक कंटेनर स्पेयर ले लो। नहीं कंटेनर रिपेयर स्प्रे जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, रहने दो। ब्रिज बूट मेरे पास आई थिंक नहीं है, ओके कोई बात नहीं। एक लटका लो। गन में गन तो नहीं चाहिए, लेकिन ग्रेनेड ले लो और गाड़ी वाड़ी तो मिल जाएगी बाहर। चलो वेट 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 वेट, एक गाड़ी चाहिए होगी। वो नहीं है क्या लॉन्ग? ये तो रिवर्स स्ट्राइक नहीं चाहिए, लॉन्ग रिवर्स। कोई बात नहीं, जो है वही निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये भी। हाँ कैरी ऑन। ओके ये किसकी बॉडी है? मामास। अरे हाँ मैं सही था, मामास की बॉडी है ये, मामास कॉप्स। कैरी ऑन बैक। ये क्या है? ओके ओके देन हैंग टू द सूट ना। ओके बूट क्लिप पे लगा लो, ठीक है। इसको फुल रैक पे लगा लो, ओके गुड। वेरी All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Malingan's special. यही तो जानना है कि मामा की बॉडी क्यों नेक्रोसिस को फॉलो नहीं कर रही है, बीटी में क्यों नहीं बदल रही है। आप ये सीन देख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये मैं स्किप नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता हूँ। Alright then. हमें कहाँ लेके जाना है? ये क्या बात हुई यार? कहाँ लेके जा? अच्छा इधर लेके जाना है क्या? ये तो रिट्रीव है, फिर डिलीवर कहाँ है? अच्छा इधर लेके जाना है शायद, ये है। ओके 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 ओके, रास्ता दिखा जरा एक बार। बहुत गंदा रास्ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। देखो जैसे नॉर्मल इंसान की बात करो, हम लोग मरते तो क्या बोलते हैं? जन्नत, जहन्नुम, नरक, स्वर्ग, यहाँ बोलते हैं हम जाते हैं, हमारी आत्मा पहुँचती है वहाँ पे। जस्ट लाइक दैट, अब यहाँ कोई मरता है तो एक अपना बीच पे जाता है, उसको बीच समझ लो आप, ठीक है? बीच वर्ड यूज़ करते हैं। हम लोग तो एक साथ यहाँ रहते हैं, इंसान हम लोग एक साथ यहाँ रह रहे हैं, बातें कर रहे हैं डॉल, बट जब मरते हैं तो हमारा अलग अलग बीच होता है। लेकिन जब एक साथ बहुत लोग की मौत होती है, जस्ट लाइक सोल्जर्स जब मरते हैं, बहुत सारे ब्लास्ट में ऐसा कुछ मरे होंगे, तो इनके बीच आपस में इंटैंगल मतलब उलझ गए होंगे और वो एक साथ एक बीच पे हैं और वो एक लूप में बार बार वो घूम रहे हैं। एक वॉर लड़ रहे हैं जो वहाँ पे कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना कभी खत्म होगा, उसी में गोल गोल घूम रहे हैं। और जो हमारे साथ ये हादसा हुआ वो कहीं ना कहीं हमें उनके बीच पे लेकर पटक दिया था उसने, वहाँ पे उसी बीच पे, और वहाँ से होकर वापस आए। लेकिन बीच से अगर हम उसके गले में लगा हुआ डॉग टैग लेकर वापस आ सकते हैं, तो मेरी थियरी कुछ इस पे है यार। मैं कुछ सोच रहा हूँ जो बहुत अजीब होगा अगर सच में अगर ये सच हुआ तो। लेकिन मैं इस नतीजे पहुँचूँ से पहले मैं बाद में आपसे बात करूँगा, बिकॉज थोड़ा बहुत और मैं जान लूँ, बिकॉज मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत खतरनाक हो सकता है यार। बहुत आपको लगेगा कि कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा हूँ मैं।
लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो पॉसिबिलिटी उसकी है, बट मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। आप थोड़ा बहुत आप समझ रहे होगे इसके बारे में। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इसके बारे में बहुत जल्दी बात करूंगा। मुझे लग रहा है रहस्य बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, सो मैं थोड़ा इंतजार करना चाहता हूँ। मेरी थ्योरी क्या है इसके बारे में आपसे मे बी नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँ मैं, ठीक है? चलो फिलहाल के लिए इसको डिलीवर करते हैं। ओह माय गॉड, Weapons restrictions lifted. बाइक भी ऐसी है जो यार बिल्कुल जल्दी इसका वो ख़त्म हो जाएगा, वो बैटरी। एक वक्त था जब मामा को हम जिंदा थी वो और तब लेके गए थे, और एक बार अब उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। रास्ता दिखाना एक बार, कहाँ से था? My God, not the BTs, man. Delivery complete. Displaying performance evaluation. थर्मल पैड, ये क्या है? Please proceed into the facility with the cadaver. Good work. यहाँ रिसर्च होता है बॉडीज पे। ये टाइमर कैसा है नीचे? Hartman? कार्डियक अरेस्ट? Administering shock. Stand clear. ये मर चुक एपिसोड 8 हार्टमैन। इस समझ में नहीं आया, कार्डियक अरेस्ट लिखा हुआ था, ये मर चुका था। Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam.
I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial chordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Sorry, Manaika. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One
day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. हिग्स का हाथ है इन सब के पीछे, लेकिन क्यों, क्या चाहता क्या है वो इन सब? Please hold on to something. ये इंसान हर रोज बीच पे आता है इन केस Before I कि forget, अपनी I वाइफ have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 3 मिनट में वापस आ जाएगा ये। ओके ठीक है। 3, 2, 1. इसको लगता है कि इसकी वाइफ और जो बच्चा है, मतलब अब एक अनंत काल बिताने वाले हैं वहाँ बीच पे, तो क्यों ना कि उनके साथ ही ये भी मतलब मर के वो पहले उनको खोजना होगा कि वो किस बीच पे कहाँ पे हैं, ताकि मरने के बाद ये भी उनके साथ ही चला जाए वहाँ पे, और उसके बाद जो भी जितना भी वक्त बचा है या फिर इटर्निटी जो भी है वो उनके साथ ही बिताना चाहता है, इसलिए हर रोज ये जाता है और उनको खोजता है वहाँ पे। खैर 3 मिनट के लिए मैं क्या करूँगा अब? मुझे लगता है कि 3 मिनट के लिए मुझे भी आराम करना चाहिए। चलिए फिर मैं आपसे मिलता हूँ 24 घंटे बाद अप्रॉक्स, आई थिंक, शायद, या फिर 3 दिन बाद, आप पे डिपेंड करता है। जैसा वीडियो पर रिस्पॉन्स होगा उस अकॉर्डिंग करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू सो मच। बाय बाय। कहानी बहुत ही रोचक मोड़े पहुंचने वाली है, नो डाउट, और बहुत खतरनाक थ्योरी है जो मैं सोच रहा हूँ, शायद वो भी आपसे डिस्कस करूँ। अगर वो सच हो गया तो बहुत अजीब होगा। चलिए मिलता हूँ। लव यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।